ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद जी की आपकी बात ही कुछ और थी। स्वामी विवेकानंद, जब भी एक शब्द हम सुनते हैं तो एक शक्ति का एहसास होता है। इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पेशेंस, इनफाइनाइट प्योरिटी, इनफाइनाइट परसिवरेंस। तो स्वामी विवेकानंद जी की एक आपकी शॉर्ट बुक है, आपकी इंस्टेंट इंस्पिरेशन। इसमें स्वामी जी के आपके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आपके कोट्स, पावरफुल कोट्स का आपका ये कलेक्शन है। तो ये मैं आपका काफ़ी टाइम से आपका पढ़ता हूँ, फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ इटसेल्फ। जब भी थोड़ा सा मैं आपका लो फील करता हूँ या थोड़ा सा डिसहार्टन फील करता हूँ, देन आई यूज टू हैव अ रीड ऑफ दिस बुक इंस्टेंट इंस्पिरेशन। एंड इन दिस बुक on page number 58 we have the topic the greatest strength. So we shall read some quotes from this chapter, the greatest strength, and with me repeat the quotes after me and feel the energy behind the quotes, feel the emotions behind the quotes, behind the sayings of the great saint, of the great orator of the time, Swami Vivekananda. It is gentleness that has the strength to live on and to fructify, and not mere brutality and physical force. Holiness is the greatest power. Everything else quells before it. Out of purity and silence comes the word of power. Out of purity and silence comes the word of power. What brutality is there which purity and chastity cannot conquer? कितनी बड़ी बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप प्योरिटी और चेस्टिटी के द्वारा कंकर नहीं कर सकते? ब्रह्मचर्य का प्रताप, संयम का प्रताप ऐसा होता है, उसके द्वारा आप इस संसार में लौकिक और परलौकिक जगत में सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका मार्ग अब आपका स्वामी विवेकानंद दिखाते हैं, किस मार्ग पर हमें आपका किस तरीके से आगे बढ़ना है। स्वामी जी कहते हैं, बी प्योर फर्स्ट, बी प्योर फर्स्ट एंड यू विल हैव पावर। बी प्योर फर्स्ट and you will have power. The just brain has tremendous energy and gigantic willpower. The just brain has tremendous energy and gigantic willpower. Continence gives wonderful control over mankind. Continence gives wonderful control over mankind. The spiritual leaders of men have been very continent, and that is what gave them power. कितनी बड़ी बात कही है स्वामी जी ने। बी प्योर फर्स्ट, पहले आप प्योर तो होइए, देन यू विल हैव पावर। द जस्ट ब्रेन हैज ट्रेमेंडस एनर्जी। आपका जो ब्रह्मचारी होता है उसके पास अथाह ऊर्जा होती है, और उसकी जो आत्मबल होता है वह आपका बहुत ही उन्नत स्तर का होता है। तो ये आपका क्या होता है? इट गिव्स अ वंडरफुल कंट्रोल ओवर मैनकाइंड। ये आपका जो मानवीय स्वभाव है, जो आपकी मानवीय सभ्यता है, उस पर नियंत्रण करने का ये एक अटूट हथियार है। कॉन्टिनेंस। तो हमारे जो भी आपके जो आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, चाहे वो किसी भी काल में रहे हैं, तो वह आपके परफेक्ट ब्रह्मचारी थे। महात्मा बुद्ध भी आपकी यही बात अपने शब्दों में कहते हैं।
कि संसार को, इस दुनिया को आप तलवार, गोलियों, बंदूक से नहीं जीत सकते। अगर आपको इस संसार को जीतना है तो पहले अपने आप को जीतना पड़ेगा। जो हमारे मन के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, तो इन सभी भावों को आपको जीतना होगा। जब आप इन भावों को जीत लेंगे तब आप इस संसार को स्वतः ही जीत लेंगे। Is there a greater strength than that of Brahmacharya? Purity, my boy, purity. Is there a greater strength than that of Brahmacharya? Purity, my boy, purity. क्या इस संसार में ब्रह्मचर्य से ज़्यादा शक्तिशाली कोई चीज़ है इस संसार में? नहीं है। There is no allegiance possible where there is no character in the leader, and perfect purity ensures the most lasting allegiance and confidence. Once a disciple said, "But who can aspire to be like you, Swamiji? Who can come by that oratorical power of expounding philosophy which you have?" Then Swamiji replied, "You don't know. That power may come to all. That power comes to him who observes unbroken brahmacharya for a period of 12 years with the sole object of realizing God. I have practiced that kind of brahmacharya myself, and so a screen has been removed, as it were, from my brain. For that reason, I need not anymore think over or prepare myself for any lectures on such a subtle subject as philosophy. Suppose I have to lecture tomorrow. All that I shall speak about will pass tonight before my eyes like so many pictures, and the next day I put into words during my lecture all those things that I saw. So you will understand now that it is not any power which is exclusively my own. Whoever will practice unbroken brahmacharya for 12 years will surely have it. If you do so, you too will get it. A chaste brain has tremendous energy and gigantic willpower. Without brahmacharya, there can be no spiritual strength. Brahmacharya gives wonderful control over mankind. एक बड़ी बात कही है स्वामी जी ने. A chaste brain has tremendous energy and gigantic willpower. Without brahmacharya, there can be no spiritual strength. भूल जाइए, ब्रह्मचर्य के बगैर, प्योरिटी के बगैर कोई भी आपके पास आध्यात्मिक शक्ति होगी. Brahmacharya gives wonderful control over mankind. The ideal of faith in ourselves is of the greatest help to us. Throughout the history of mankind, if any motive power has been more potent than another in the lives of all great men and women, it is that of faith in themselves. I addressed the assembly as sisters and brothers of America. A deafening applause of 2 minutes followed, and then I proceeded, and when it was finished, I sat down, almost exhausted with emotion. The next day, all the papers announced that my speech was the hit of the day, and I became known to the whole of America. The next day, all the papers announced that my speech was the hit of the day, and I became known to the whole of America.
You may wonder what made them do this. You may wonder if I had some strange power. Let me tell you that I did have a power. And this is it. Never once in my life did I allow myself to have even one disturbed thought. I trained my mind, my thinking, and the powers that man usually uses along that line. I put into a higher channel and it developed a force so strong that nothing could resist it. I repeat again, never once in my life did I allow myself to have even one disturbed thought. I trained my mind, my thinking, and the powers that man usually uses along that line. I put into a higher channel and developed a force so strong that nothing could resist it. Nothing could resist it. महात्मा बुद्ध ने भी अपनी वाणी में आपकी यही बात कही है। संयोग या संसर्ग से इंद्रिय जनित ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय जनित ज्ञान से तत्संबंधी सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा दृढ़ होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह विवाह ना करे, विवाहित जीवन को एक प्रकार से दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ गड्ढा समझे। तो इन सभी कोट से, इन सभी इंस्पायरिंग कोट से जो स्वामी विवेकानंद जी की हैं, इनसे हमें आपकी यह शिक्षा प्राप्त होती है कि पवित्रता, धैर्य और एकनिष्ठ लक्ष्य के प्रति अगर हम आपका अग्रसर रहते हैं तो हमें निश्चित ही सफलता आपकी प्राप्त होती है। पेशेंस, प्योरिटी एंड परसिवरेंस, only these three things are required to excel in any field, in any walk of life. It doesn't matter whether you are a student, whether you are a householder, whether you are professional, whether you are a businessman, whether you are an old person. Whatever you have decided in your life, whatever you are to excel in your life, just follow these three things and feel the eternal bliss, existence, knowledge. जय राम कृष्ण दोस्त, जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण।